हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। हमारा आज का मेन टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बट द सब टॉपिक इज इंटरेस्टिंग वन, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं द रेडिएशन प्रेशर एंड सम एनसीईआरटी क्वेश्चंस। सो लेट्स फोकस अपॉन द आर्टिकल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रीवियस सेशंस में हमने क्या करा है इन द सेशन 1 एंड द सेशन 2 ऑफ द सेम। जिन्होंने उन सेशंस को नहीं देखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे मस्ट गो एंड विजिट दोस पर्टिकुलर सेशंस एंड आफ्टर दैट ओनली कम एंड विजिट दिस पर्टिकुलर लेक्चर। Now, what I'm going to focus on in today's session is just two basic points. One is going to be the radiation pressure and the force exerted by the radiation which is falling on the surface. And then I'm going to discuss the NCERT back exercise questions with you. So first of all, let me talk about the momentum which is going to be carried by the EM wave. So the momentum carried by an EM wave is simply defined as equal to the energy carried by it and upon C. So that's energy upon the C. What is C? That's the speed of the EM wave in the vacuum. Now we can have a change in the momentum once this wave is going to hit a surface or is obstructed by a surface. मतलब किसी surface पे उसको incident करवाएंगे तो फिर क्या होगा? Change in momentum possible है. Nicol and Hull basically made us understand in 1903 about this radiation pressure. आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी आंखों पे अगर बहुत ज़्यादा रोशनी पड़ती है तो आपकी आंखों में शायद दर्द हो जाता है या आपसे वो देखा नहीं जाता है बिकॉज इट क्रिएट्स अ प्रेशर। काफ़ी देर तक अगर आप किसी स्क्रीन को स्टेयर करते रहते हैं तो आपकी आंखों के बैक पे पेन शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ द रेडिएशन प्रेशर। So which means that we believe now that the radiation, that's the EMW or the light which you like to say, is going to exert the pressure on the surface on which it falls. So let's try to get into the shoes of the Nichols and Hull and try to find an expression for the same. तो हम दो चीज़ों का एक्सप्रेशन निकालना पसंद करेंगे, सबसे पहले फोर्स का and then about the pressure. So how do I get the value of the force? So force जो होती है that is simply as equal to rate of change of momentum, तो मैं उसको लिख लेता हूँ डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। नाउ लेट्स इमेजिन अ पर्टिकुलर सिचुएशन कि हमारे पास एक पर्टिकुलर सरफेस है और इसके ऊपर क्या हो रहा है, वेव आ रही है। So now the wave was falling on it. So just imagine that this particular wave was falling on this particular surface. So as a wave falls on this particular surface on this particular area, तो यहाँ पे कुछ एरिया होगा, उस एरिया को A लिख लेते हैं। And let's have a condition that it gets completely absorbed. So this wave was having a momentum जिसको हम P से denote कर लेते हैं, but the condition is getting that it is getting completely absorbed. So we are writing over here complete absorption. तो अगर ऐसा हो जाता है कि वेव कंप्लीटली अब्जॉर्ब हो गई है तो उसका जो चेंज इन मोमेंटम आएगा इज गोइंग टू बिकम एज इक्वल टू सिंपली एज पी मैग्नीट्यूड में, क्योंकि फाइनल मोमेंटम जीरो है, इनिशियल मोमेंटम पी के बराबर है, तो चेंज इन मोमेंटम सिंपली पी के बराबर हो जाएगा। एंड सो द फोर्स ओवर देयर कैन बी रिटन एज इक्वल टू एज पी अपॉन डेल्टा टी। नाउ हाउ डू आई राइट द एक्सप्रेशन फॉर द पी? सो पी मुझे ध्यान आया that P I have just written in the last slide as equal to energy upon C. So that's equal to U upon C and delta T. Oh, यहाँ से मुझे ध्यान आया about the expression of the intensity. So intensity का expression होता है that's equal to the energy upon area and delta T. So energy that means U upon A and delta T. इसका मतलब मैं U को लिख सकता हूँ यहाँ से I into A into delta T. So I am substituting instead of U as I into A into delta T and upon C into delta T. So delta T cancelled है. I into A को I can write as a power. So that's equal to the power and upon C. So that looks like my expression for the force. This is the case when the radiation is getting completely absorbed. Now consider the scenario अगर ऐसा हो कि ये जो रेडिएशन आ रही है which was falling on this particular surface, let me sketch that for you. एक तो ये सारी नॉर्मल इंसिडेंस है, यू कैन ऑल्सो गेट अ केसेस फॉर द ओब्लिक इंसिडेंसेस ऑल्सो। ये अभी हम नॉर्मल इंसिडेंस केसेस की बात कर रहे हैं। सो व्हेन द वेव इज गोइंग टू स्ट्राइक दिस सरफेस, व्हाट हैपेंस, लेट्स अज्यूम दैट इट गॉट रिफ्लेक्टेड, इट गॉट प्योरली रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्ट हो गई। अगर वो प्योर रिफ्लेक्शन पे आ गई, लिख लेते हैं, इफ इट गेट्स इनटू द प्योर रिफ्लेक्शन मोड, सो इफ इट गेट्स इनटू द प्योर रिफ्लेक्शन मोड तो फिर क्या होने वाला है?
तो इनकमिंग मोमेंटम कितना था, दैट वाज सपोज टू बी p, इनफैक्ट वो नीचे की तरफ आ रही थी तो हम उसको माइनस p लिख लेते हैं व्हेन द वेव वाज मूविंग डाउन, और क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होगी तो उसका न्यू मोमेंटम कितना हो जाएगा, प्लस ऑफ p, which means अगर मैं चेंज इन मोमेंटम लिखता हूं इन द केस ऑफ द प्योर रिफ्लेक्शन, दैट बिकम्स एज इक्वल टू p माइनस p, सो दैट गिव्स मी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ p. द एरिया जिसके ऊपर ये वेव इंसिडेंट है, दैट इज स्टिल एज इक्वल टू a. So now if I'm going to rewrite the expression for the force over here, which is again as the rate of change of momentum, but this time the change in momentum becomes at twice of p. और p को मैंने कैसे लिखना है, एज इक्वल टू u अपॉन c, और u को मैंने कैसे लिखना है, दैट इज i इंटू a इंटू डेल्टा t अपॉन c डेल्टा t. सो डेल्टा t कैंसल्ड है, एंड i इंटू a को कैसे लिखना है, पावर. So I am getting a change in the expression which is a twice of the previous expression. Now suppose I have a query with me, what if I have a partial absorption and a partial reflection? So if the case is for the partial absorption and a partial reflection, so I am going to use the relation that A plus R is equal to 1, in which A is known as absorptance and R is known as reflectance. So a good absorber is a bad reflector. For example, A की value 0.6 है तो R की value 0.4 होगी. अगर वो प्योर रिफ्लेक्शन होता है तो इसका मतलब R की वैल्यू 1 हो जाएगी. सो फॉर द प्योर रिफ्लेक्शन R विल बी इक्वल टू 1 एंड A विल बी इक्वल टू 0. For complete absorption, A will be equal to 1 and R will be equal to 0. Now, if I'm going to use the expression for the force and the partial absorption and the partial reflection, the expression will come out to be as power upon C and into 1 plus R. And now for the case of the pure absorption, you can use R equal to 0. So the expression will come out to be power by C. And for the case of the pure reflection, substitute R equal to 1. So we'll get twice of power upon C. Further, if I'm going to write the expression for the radiation pressure, तो मैं radiation pressure को RP से denote कर लेता हूँ. So that the radiation pressure is going to be as equal to force upon the area. तो force मैंने कैसे लिखी है, as equal to IA upon C. So that's IA upon C and divided by area. So area gets cancelled and get the expression as I by C. ये किसके लिए? That is for the case of the complete absorption. And if I'm looking for the case of the pure reflection, in that case, my result over here is going to change. And the result over here is going to become as equal to as expression the force upon area से ही आएगा. पर ये फोर्स कौन सी है, एब्जॉर्ब्ड वाली, ये कौन सी है, रिफ्लेक्टेड वाली. ये एब्जॉर्ब्ड फोर्स थी, ये कौन सी है, रिफ्लेक्टेड फोर्स अपॉन एरिया. सो दैट्स सिंपली ट्वाइस ऑफ आई ए अपॉन सी and divided by the area. So area gets cancelled and I get the expression at 2I by C. Which means if I'm going to generalize this case for the partial absorption and partial reflection, then the radiation pressure can be written as equal to I upon C and into 1 plus of R. So cool and nice expressions. Now let's solve some questions from the NCERT. Let's look at a question number 1 over here. It says a plane electromagnetic wave travels in the vacuum along Z direction. There's a direction of the travel of the EM wave. So what can we say about the direction of the electric and the magnetic field vectors? इस क्वेश्चन को करने के लिए हम पॉइंटिंग वेक्टर को यूज कर सकते हैं. और अगर हम पॉइंटिंग वेक्टर को यूज करते हैं, सो पॉइंटिंग वेक्टर बेसिकली एक्सप्लेन्स टू मी दैट एस वेक्टर is 1 upon mu naught and into E cross B. And in the previous session, I've explained to you that the significance of the pointing vector, one of the significance of the pointing vector is कि वो हमें बताता है that what is the direction of the EM wave and which is handled by E cross B. And so I can use a very simple behavior of the cyclic nature of I, J and K. So which means that if I want कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो z पर हो, क्योंकि पॉइंटिंग वेक्टर बताता है कि वेव किधर प्रोपगेट कर रही है. तो अगर ये k पे चाहिए, सो विच सिंपली मीन्स दैट E should be along I and B should be along J, so that happily explains that I cross J is supposed to be K. And so where is the electric field? So electric field is supposed to be along the x-axis and the magnetic field is supposed to be along
the y-axis. So that's going to be the simple behavior and the solution for this particular question. Additionally, the question has a second part also, where it states that the frequency of the wave is 30 megahertz. Don't miss the mega symbol. So what is a wavelength? So I have this simple relation for any kind of a wave, that the speed of the wave is the product of frequency into wavelength. यहाँ पे किस वेव की बात हो रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की. कहाँ ट्रैवल कर रही है? वैक्यूम में. तो स्पीड का मतलब क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. So I can use C is equal to F into lambda. So I can get the value for the wavelength as equal to C upon F. अब C की वैल्यू कितनी है? 3 into 10 power 8 meter per second divided by the frequency, that is 30 megahertz. That means 30 into 10 power 6. So what do I get? I get this as 300 and divided by 30, so that becomes equal to 10 meters. So that's the value for the wavelength. Let's proceed to the next question. The next question states a radio can tune in any station in the 7.5 megahertz to 12 megahertz band. You would have used the FM stations widely. आप देखते होंगे कि आप ट्यूनिंग करते हैं, तो आप देखोगे, अगर आप नेक्स्ट टाइम अगर आपने नहीं ऑब्जर्व करा है तो जाके चेक करना कि जब आप एफएम को ट्यून करते हो, उसे एक रेंज होगी अराउंड 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज, इसके अराउंड ऑब्जर्व करना. सो ऐसा ही कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक बैंडविड्थ की बात करी जा रही है. सो दिस इज काइंड ऑफ अ बैंडविड्थ. बैंडविड्थ का मतलब हमेशा होता है एक रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसीज विच इज अलॉटेड टू अ पर्टिकुलर स्टेशन. तो यहाँ पे लोअर जो फ्रीक्वेंसी बैंड है वो 7.5 मेगाहर्ट्ज और अपर फ्रीक्वेंसी कितनी है? 12 मेगाहर्ट्ज. जो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बैंड पूछा जा रहा है, तो सिंपल है, हम लोअर वेवलेंथ एंड अपर वेवलेंथ निकाल लेते हैं. अब देखो मजेदार बात क्या है, सी आपका एफ इंटू लैम्डा होता है. इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो कि जहां पे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी तो वहां पे वेवलेंथ मिनिमम होगी. तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है वो 12 है, तो वहां से आपको मिनिमम वेवलेंथ मिल जाएगी. So that minimum wavelength is going to be as equal to C मतलब 3 into 10 power 8 divided by the frequency which is 12 megahertz. So that is 12 into 10 power 6. That becomes as equal to 3 into 100 upon 12. So that cancels and gives me 25 meter. That's a minimum wavelength. And now I am going to calculate द मैक्सिमम वेवलेंथ. वो कब? जब फ्रीक्वेंसी आपकी मिनिमम होगी तो वेवलेंथ ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज हो जाएगी. सो द वैल्यू फॉर द मैक्सिमम वेवलेंथ बिकम्स इक्वल टू वंस अगेन सी बाई एफ मिनिमम. तो सी की वैल्यू है 3 इंटू 10 पावर 8 और फ्रीक्वेंसी मिनिमम कितना है? 7.5 मेगाहर्ट्ज. तो 7.5 इंटू 10 पावर 6. दिस वर्क्स अपॉन एज 300 एंड डिवाइडेड बाय 7.5. तो एक जीरो और लगा लेते हैं. 25 से कैंसिल हो जाएगा. 25 इंटू 3 75 एंड 25 125 50. सो 120. सो 120 by 3 becomes 40 meter. So I have the maximum and the minimum with me, which means the wavelength band is supposed to be between 25 meter to 40 meter. Easy question. Let's move to the next question. Oh, the question says there is a charged particle oscillator. Do remember कि जब हम ईएम वेव की बात करते हैं, उसके सोर्स की बात करते हैं, तो क्या होता है? एक ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल कहां से आता है? फ्रॉम द एलसी टैंक सर्किट. उस एलसी टैंक सर्किट की एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम क्या बोलेंगे? सोर्स फ्रीक्वेंसी. सो द क्वेश्चन ओवर हियर स्टेट्स a charged particle oscillates about its mean equilibrium position with the frequency of the 10 power 9 hertz. So the frequency of the source over here of the EM wave is given as 10 power 9 hertz. Another question is asking to us very interesting thing. वो हमसे पूछ रहा है what is the frequency of the EM waves produced by the oscillator. तो भाई जो EM wave produce हुई है वो तो इसी charge particle ने ही produce करी है. So the frequency of the EM wave is same as the frequency of this source particle. And so the frequency of that EM wave is going to be the same and is going to be the 10 power 9 hertz, the same frequency. राइट? करेक्ट है ना? राइट, बिकॉज ईएम वेव को प्रोड्यूस करने वाला ही ये एलसी टैंक सर्किट है. सो द प्रोपगेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ द ईएम वेव, जब आप उसकी इक्वेशन लिखते हैं E इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो उसमें जो ओमेगा आती है जो कि 2πf होती है, उसमें वही फ्रीक्वेंसी होती है जो कि आपकी ऑसिलेटिंग चार्ज की फ्रीक्वेंसी है, या वही ओमेगा होती है जो कि आपके एलसी टैंक सर्किट की ओमेगा होती है, विच इज नथिंग बट 1/√LC. द नेक्स्ट क्वेश्चन. It says the amplitude of the magnetic field part of a harmonic electromagnetic wave is
510 नैनो टेस्ला, ये हमें मैग्नीट्यूड गिवन है किसका, एम्पलीट्यूड का, एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज 510 into 10 power minus 9 टेस्ला. नैनो मतलब 10 power minus 9. Now it is asking what is the amplitude of the electric field part of the wave. तो हमें मैक्सवेल रिलेशन से एक रिलेशन पता है मैक्सवेल इक्वेशंस की मदद से. that C is supposed to be equal to E naught upon B naught. This is what we know. And if you know this particular relation, तो यहाँ से हम E naught की वैल्यू निकाल लेते हैं. So the E naught from here should be simply as equal to B naught into C. तो B naught की वैल्यू है 510 into 10 power minus 9 और C की वैल्यू है 3 into 10 power 8. So what I'm able to see that 10 power 8 into 10, यहाँ से एक जीरो जो आ जाएगा, 10 power 9 और ये 10 power minus 9, ये सारी पावर कैंसल आउट हो रही है. So I'm left with as simply 51 into 3 और यूनिट्स क्या होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की, SI यूनिट्स, क्योंकि टेस्ला SI यूनिट है. That should be Newton per coulomb. So that works 3 and 15. So 153 newtons per coulomb is my answer. डायरेक्शन की बातें नहीं करी, अगर डायरेक्शन के बारे में पूछा होता हम बता लेते. With the help of the pointing vector, we could have easily stated the direction also. Okay, moving on to the next one. It says suppose the electric field amplitude, मतलब इस बार हमें E naught की वैल्यू गिवन है, that is 120 newtons per coulomb, और उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 मेगाहर्ट्ज. सो दैट्स 50 into 10 power 6 हर्ट्ज. क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है बी नॉट की वैल्यू से. एक बार फिर से हमारे सामने रिलेशन है सी इज सपोज टू बी इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट. तो यहाँ से हम बी नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं एज इक्वल टू ई नॉट अपॉन सी. ई नॉट कितना है 120, सी कितना है दैट इज 3 into 10 power 8. सो दैट वर्क्स एज 40 into 10 power minus 8 over here. So that is these many Tesla. तो हम इसको शायद ऐसे भी लिख सकते हैं 400 नैनो टेस्ला एज अ वैल्यू फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड. सो पहला पार्ट तो डन हो गया है. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन स्टेट्स टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर द ओमेगा. सो ओमेगा इज सिंपल, दैट इज सिंपली इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अपने को गिवन है एज 50 into 10 power 6. So that becomes 100 into 10 power 6. That becomes 10 power 8 into pi. So pi की वैल्यू अपने को पता है 3.14 into 10 power 8 the units. That becomes radians per second. So second part भी calculate हो गया. Now move on to the third part which says to calculate K. Now how do I calculate K? So K can be easily calculated as C is supposed to be equal to omega by K. The speed of the wave is simply equal to omega by K. So the K should become as equal to omega upon C. So omega तो हमने find out कर ली है 3.14 into 10 power 8. Just now we have calculated. Divided by C. So C value is known to us 3 into 10 power 8. So there is slight bit of a calculation. 10 power 8 gets cancelled. 3.14 upon 3. That is something around 1.05. And the units for this K वैसे हम क्या लिख सकते हैं? Additionally K can also be written as equal to 2 pi upon lambda, which means a unit is going to be per meter over here. So third part is also calculated, and there comes the fourth part, that's the lambda. So you can calculate it through this expression कि आप 2 pi upon lambda use कर लो, or you can also go by using the expression as C is equal to F into lambda directly. यहाँ से भी apply कर सकते हो. So from here if I am calculating, so lambda becomes equal to C by F. So 3 into 10 power 8 and divided by the frequency, which is 50 into 10 power 6 over here. So that seems to be as 10 power 6 अगर cancel करेंगे तो 100 रह जाएगा. So that is going to be 3 into 100, right? That's 3 into 100 over here. So that's 300 upon 50. So that works upon as equal to 6 meter over here. So that becomes my result over there as 6 meter over there. Right, great. And now let's talk about the next question over here. क्योंकि यहाँ के तो सारे ऑप्शंस, सारे क्वेश्चंस पार्ट्स हमारे खत्म हो गए हैं. So let's talk about the next question, where it says suppose the electric field part of an EM wave in the vacuum is given to us by this equation, and we need to find the parts 1, 2, 3, 4 and 5. We need to find out these particular parts. So how do I
find out these particular parts over there. तो पहले मैं इक्वेशन को देखता हूँ ध्यान से. That looks like E naught cos of, that's omega y and plus kt like this. और ये I cap है, इसका मतलब ये x डायरेक्शन में है. Now this explains that the EM wave is traveling along the y axis, पर क्योंकि बीच में प्लस साइन है, it explains that the EM wave is traveling along the negative y axis. मतलब हम उसको माइनस ऑफ j कैप से डिनोट कर सकते हैं. Second part is says find the value for the wavelength. So how do I find the value for the wavelength over here? So for finding the value for the wavelength, I can use the k over here, right? That is ky plus omega t, right? Let me correct this. That is ky plus omega t. So if I compare, so I can compare as the coefficient of y. तो यहाँ से 1.8 है और यहाँ से ये k है. So I have easily compared that k becomes equal to 1.8, and what is a k written as equal to, that's equal to 2 pi upon lambda. So if it is equal to 2 pi upon lambda, so lambda becomes 2 pi and divided by 1.8. So you can easily calculate from here the value for the lambda. So this is as 20 into 3.14 and divided by 18. So that's 9 and 10. So that's 31.4 upon 9. So 9, 3, 27, 44. So around 3.5 meter, something around 3.49 meters. Now the C part is telling to calculate a value for the frequency. So how do I calculate a value for the frequency? So I have the relation. That C is equal to F lambda because the wave is traveling in the vacuum. So if C is supposed to be equal to F into lambda, where F is the frequency, so frequency becomes as C by lambda. C की value कितनी है as 3 into 10 power 8, and this divided by the lambda. So the lambda is 3.5 and we can calculate from here. Or alternatively, I can also calculate by comparing from here, that omega is equal to 2 pi f. So omega is given as 5.4 into 10 power 6 divided by 2 into 3.14. So that should be the value for the frequency. So both of them are going to give me the same result over there. So these many hertz is the value for the frequency. Then it says what is the amplitude of the magnetic field, and write an expression for the magnetic field. So amplitude of the magnetic field can be calculated using the E naught. So E naught की value 3.1. Right. So if I continue the session from here, so I have the value for the amplitude of the magnetic field. So I can use that C is supposed to be equal to E naught upon B naught. So I can find out a value for the B naught from here. So the value for the B naught is supposed to be equal to as E naught by C. So E naught कितना है 3.1.
and divided by C, that is 3 into 10 power 8. So that works around 1.03 into 10 power minus 8 of Tesla. That's a value for the amplitude of the magnetic field. But the question also tries to judge कि भाई हम एक्सप्रेशन मैग्नेटिक फील्ड का लिख पाते हैं कि नहीं. तो वहां पर हमें पॉइंटिंग वेक्टर की शायद जरूरत पड़ेगी कि हम देख रहे हैं कि जो डायरेक्शन है जो वेव प्रोपगेशन का वो तो नेगेटिव वाई पर है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपकी पॉजिटिव एक्स पे जा रही है. सो हम आई जे के थ्रू इसको चेक कर लेते हैं और हमें पता है कि पॉइंटिंग वेक्टर को किस तरीके से यूज करना है कि जो पॉइंटिंग वेक्टर होता है दैट्स इक्वल टू 1/μ0 इनटू ई क्रॉस बी. तो लेट्स जस्ट ट्राई टू फिट इन ओवर हियर फॉर द डायरेक्शन कि जो एस है वो माइनस ऑफ जे कैप से डिनोटेड है और जो ई है वो आई कैप से डिनोटेड है. सो व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द बी ओवर हियर. तो अगर हम यहाँ पे आई क्रॉस के लिखते हैं सो आई क्रॉस के विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ जे. सो दैट फिट्स की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ पर है, दैट इज अलोंग द z axis. And so if I am going to write the equation for the magnetic field, तो एक तो उसका एम्पलीट्यूड आएगा बी नॉट एंड देन कॉस ऑफ, क्योंकि हमें पता है कि सेम फेज में रहती है जो मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशंस हैं वेव और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन वेव वो सेम फेज में रहती है. सो दैट शुड बी द सेम एज ओमेगा के वाई प्लस ऑफ ओमेगा टी. तो बस बी नॉट की वैल्यू चाहिए थी जो कि हमने निकाल ली है. सो इट शुड बी 1.03 इंटू 10 पावर माइनस 8 टेस्ला यूनिट्स के साथ में और बाकी टर्म जो है वो एग्जैक्टली सेम है, दैट इज कॉस ऑफ 1.8 रेडियंस पर मीटर वाई एंड प्लस 5.4 इंटू 10 पावर 6 इंटू टी. और डायरेक्शन अगर हम लिख रहे हैं बी वेक्टर की तो ये आपकी के कैप पर आ रही है. सो दैट्स द कंप्लीट इक्वेशन ओवर देयर. Let's check one more question. It says about 5% of the power of a 100-watt light bulb is converted to the visible radiation. And what is the average intensity of the visible radiation at a distance of 1 meter from the bulb? So I know that since it is a point kind of a source and it is emitted isotropically, but similar in all the directions. So it is visualized at this idea. But similar in all the direction means it is going to be a spherical region in which the energy is moving. तो भाई ऐसा होगा कि जो एनर्जी है वो सभी डायरेक्शंस में जा रही है और अगर मैं कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट लेता हूँ स्फीयर के ऊपर तो सब जगह पे जो इंटेंसिटी है वो सेम आएगी. और इंटेंसिटी में कैसे लिख सकता हूँ एज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया. और एरिया किसका, द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर स्फेरिकल रीजन विच इज नथिंग बट 4 पाई आर स्क्वायर. लेकिन जो पावर थी जो सोर्स की उससे जब इंटेंसिटी बनी, मतलब इस पॉइंट तक जब एनर्जी पहुंची किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब एनर्जी पहुंची है जहां पर हम इंटेंसिटी निकाल रहे हैं तब तक कुछ एनर्जी खराब हो गई होगी. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द एफिशिएंसी. सो लेट्स से द एफिशिएंसी इज सपोज्ड टू बी डिनोटेड एज ईटा. सो इसको हम एफिशिएंसी से डिनोट कर लेते हैं. So I can write the intensity as P upon 4 pi r square multiplied by eta. अब मैं इसके अंदर वैल्यूज को प्लेस करके रिजल्ट को डिराइव कर लेता हूँ. So the power is supposed to be given as how much 100 watt divided by 4 pi r square. डिस्टेंस मुझे गिवन है कितना 1 मीटर फ्रॉम द बल्ब, तो इसका मतलब r की वैल्यू मुझे 1 मीटर गिवन है और दैट्स 4 पाई इंटू 1 स्क्वायर. ईटा कितना है 5%, मतलब 5 अपॉन 100. सो 100 गेट्स कैंसल्ड. That becomes 5 upon 4 pi. Pi matlab that is 22 by 7. That becomes 35 divided by 88. We need to calculate that. So that is roughly around 0.4, matlab 0.39 something आएगा. 0.398 something it is calculated. So roughly I can take this as 0.4 units intensity है. So power upon area. So power कैसे watts में? So watt upon meter square. So that becomes our relation over there. Now there is the second part of also of this which says that calculate the intensity at a distance of the 10 meter. तो 10 मीटर मतलब और दूर हो जाएगा सोर्स से, यहाँ पहुंच जाएंगे. इसका मतलब भाई एनर्जी को और दूर ट्रैवल करना पड़ा, इसका मतलब वहां पे और थोड़ा लॉस होगा. तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी, मतलब अगर ये I1 है या I2 है तो I2 कम आ जाएगी.
सो इंटेंसिटी ओबेज लाइक एन इनवर्स स्क्वायर लॉ ओवर हियर, पर वो इनवर्स स्क्वायर लॉ तभी तक वैलिड है जब हम पॉइंट सोर्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स है, तो इस वजह से आई एम यूजिंग द इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या है? इज प्रोपोर्शन टू 1/r स्क्वायर। इसका मतलब अगर मैं 10 मीटर पे निकालना चाहूँ, लेट्स से दिस डिस्टेंस r2, दिस इज सपोज टू बी 10 मीटर. So can I calculate like this, that I2 upon I1 is supposed to be equal to, as inverse square law है ना, so R1 upon R2 whole square. So which means that R1 is supposed to be given as 1 meter, R2 is given as 10 meters, so that's 1 upon 10 square. So that I2 is going to become I1 upon 100. So at a distance of the 10 meter, अगर मैं B part लिख लूँ, so when this R becomes equal to 10 meters, I've easily calculate the intensity over there, which is going to be as I1 upon 100. तो I1 कितनी निकाली हमने? 0.4. So 0.4 upon 100